आदाब, नमस्ते, दिस इज समीर और आज आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माराकेश लेके जाने वाले हैं। और एक चीज़, ये व्लॉग हमने अभी रिसेंटली नहीं बनाया, कुछ टाइम पहले गए थे, बट कुछ जगह टाइमलेस होती हैं, वो समय के साथ बदलती नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब माराकेश एक तरीके से मोरक्को का दिल है एंड यूरोपियंस के लिए ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि वहाँ पर उनको डिफरेंट कल्चर मिलता है, डिफरेंट वेदर मिलता है। आपको पता ही होगा यूरोप एक तरीके से काफ़ी ठंडी जगह है, तो यहाँ पे उनको वो ठंड एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता है। खाना अलग मिलता है, लोग का पहनाव अलग है और साथ ही साथ बहुत महंगा भी नहीं है उनके लिए, तो डेफिनेटली इस तरीके से एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये मोहतरमा वहीं से है। एंड मोरक्को में काफ़ी सारी हॉलीवुड पिक्चर्स की शूटिंग भी हुई है, कुछ इंडियन मूवीज़ भी वहाँ पे शूट हुई है। एंड रिसेंटली एक इंडियन मूवी में भी दिखाया गया था कि माराकेश है, बट वो एक्चुअली माराकेश नहीं था। इट वॉज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन इटली जहाँ पे शूट किया गया था, बट उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये व्लॉग हमने कुछ टाइम पहले शूट किया था, तो उस टाइम हमने सोचा था कि इंग्लिश में शूट करते तो बहुत सारे पार्ट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, बट अभी क्योंकि अभी इसे हम रिलीज़ कर रहे हैं तो हम कुछ पार्ट आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे एंड कुछ पार्ट आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। एंड फ्यूचर के जो व्लॉग्स होंगे वो हम कोशिश करेंगे हिंदी में ही बनाए, ताकि अपने ऑडियंस से अच्छे से कनेक्ट कर सके। बाकी पे जो भी सजेशन होंगे, फीडबैक होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप ये पेज पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड और क्या, शुरू करते हैं। We landed in Marrakech in the dead of the night yesterday and went straight for the bed as soon as we reached our hotel, or a riad as they call it here in Morocco. We wanted to be all fresh and peppy for our next day. Marrakech had been on our list for quite some time now. We had done our research and zeroed in on the places we wanted to visit in our 3 days here. So stay tuned and watch till the very end to see despite all precautionary measures, we still got scammed, but nonetheless made the most of our time here. We'll take you on a tour of the main square, the souks, a royal palace, a beautiful garden, and many more wonderful places in the Red City. एक चीज़, माराकेश आपको होटल्स बहुत कम ही मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे रियाद का कॉन्सेप्ट है। रियाद एक तरीके से 2 फ्लोर या 3 फ्लोर का घर होता है एंड ऊपर उसमें एक छत होता है। एंड नॉर्मली हर लोग इसी में रहते हैं, और बुक करने के लिए आप booking.com पे जा सकते हो और अपने प्राइस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना रियाद बुक कर सकते हैं। After a hearty breakfast of mint tea and some delicious local bread, we set off from our riad for the first attraction of the day. We are finally out of our hotel and on to our first destination, which is the main square Called Jemaa el-Fnaa. We can see the main square of the Medina right behind me. It's called Jemaa el-Fnaa, but we'll explore that later, because first we are going to the Koutoubia Mosque, which is right in front of me. The mosque's minaret is hard to miss if you're anywhere near the main square of the Medina. We didn't even need to ask anybody for direction. सो कुतुबिया मॉस्क का नाम एक्चुअली में एक अरबिक वर्ड कुतुबीन से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है बुक सेलर्स, या इसीलिए इसको बुक सेलर्स मॉस्क भी कहते हैं। ये मॉस्क करीबन आज से 1000 साल पहले बना था और करीबन इसको 25 साल लगे थे बनाने में, और ये माराकेश का सबसे बड़ा मॉस्क है। तो ओरिजिनली जो मॉस्क का जो ये मिनारेट है, ये एक्चुअली में एज अ लाइट हाउस की तरह काम करता था, बट अब डेफिनेटली नहीं यूज़ होता है। सैडली नॉन मुस्लिम्स को मॉस्क के अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो हमने बाहर से इसका मजा लिया, बट हमने पढ़ा है कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। So, कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। It was the middle of the afternoon and the calls from the orange juice vendors were too tempting to resist, so we made our way to have some freshly squeezed orange juice for unbelievably low prices. Now these juice vendors have all the prices displayed clearly on their cards, so it's hard to get cheated here. Drink up as much as you can while you're in the Red City. Main square in search of some good food, and we've heard that the market really livens up in the evening, so let's see. It's just 3 o'clock right now and we're really hungry. For lunch we are going to this place called Cafe des Spices. I've heard that it's really good and I want to try the local famous dish called the tagine, so let's check it out.
It's a famous spot for trying out the local food, and we found the place all jam-packed on the day that we were there. I ordered tagine as it was something I wanted to try badly. Did I like it? Well, I must say I was a tad disappointed with my order. It looked awesome, but to my Indian tongue wasn't as spicy or flavorful as I had imagined it to be. So we had our lunch and now we are just wandering about around the square, in the alleys. I mean, here you can spend an entire day just randomly walking around and soaking in all the sights and sounds. I mean, it's like an assault on your senses and we are enjoying it thoroughly. Come on, let's show you around. Wandering in the souks of Marrakech was probably the most fun activity for me in my 3 days in this city. The aromatic spices, beautifully arranged outside the small shops, the leather bags all handmade from locally sourced leather, the different kinds of paintings, the lights and the lanterns, the numerous shops selling rugs, cushion covers, which are made from cactus silk by the way, the beautiful ceramics. It's hard to tear yourself away from this kind of place if these are the things that get you going, like it happened to me. My husband had to literally drag me away from some shops sometimes, and I would just refuse to leave. Something important to keep here in mind is that you have to bargain hard while buying anything from the Medina. The vendors will often quote a very high price, and it's up to you to come down to a much more reasonable price. Trust me, coming from India, where all my life I've seen people haggling for discounts, I found it a bit difficult here. Some things like the lights I felt were too exorbitantly priced, and so even though I wanted to buy some, I did not. I had seen similar ones in Cairo's old market, and they, I think, were much more reasonably priced. By walking in the souks, we stumbled upon this little secret garden which is called Le Jardin Secret. But unfortunately, we can't go inside because it closes at 6 and the last ticket sales is at 5:30 and it's 5:45 right now. So maybe tomorrow. And if you plan to go inside, the entry fee is about 60 dirhams, which should be around 6 euros for the garden. And if you want to go to the tower, it will cost you about 35 dirhams. After wandering about in the alleys, now we are back to the main square, and as you can see, it has really come to life right now. There are tons of musicians, street dancers, and people performing different types of tricks everywhere. Snake charmers, people with hens on their head, henna artists, like you name it, and it's here. And just one thing to note here is that if you take a photograph or if you start taking a video when someone is performing, they generally will come and ask you for money, and if you don't pay them, then you can't take their photographs. And if you'd like to experience the square from a higher point, तो बगल में बहुत सारे कफ़ेज़ है स्क्वायर में. आप किसी भी कफ़े में एक नॉर्मल सा ड्रिंक ले सकते हैं, उसके टेरेस पे जा सकते हैं, और वहाँ से आप पूरा का पूरा स्क्वायर का मज़ा ले सकते हैं. और हमने भी वही किया. Something really strange and weird happened to me right now. We were just walking in the market and a lady just came to me and he said, okay, where are you from? Hi, I said, I'm from India. And she's like, okay, show me your hand, I'll make a small drawing. I said, no, thank you, I'll come to you later. And she's like, no, I'll just draw a small drawing for good luck. And she just grabbed my hand and she just started drawing. And I got so scared, and she was a bit scary, she was intimidating. And I was like, what are you doing? I don't want it, I'll come to you later. I'm going to have coffee. And she's like, no problem, it is for good luck. And you're from India, I love Amitabh Bachchan, I love Shah Rukh Khan. I was like, I don't care, I don't want all this, you can just clean it off. And she just grabbed my hand and she just started making all of that, and after 2 minutes, okay, now come on, pay me 400. I'm like, 400 for what?
And she's like, no, this is 400 because this is black henna. I was like, I don't even like black henna. I didn't even want it. And she was just scary, and then I just paid her 20 dirhams because there were other ladies in the market who had set up their stalls and they were saying that that's for 20. So I just gave her 20 and I ran. Trying to find the lady. Where is she exactly? You can see she is there and she is forcing the other ladies to just make this mehendi on their hand. Those are the other people who just got scammed. The worst part is that I don't even like this design. The next day, after again a heavy dose of the local breakfast, we set off on foot for the Bahia Palace. So since we're staying in Medina, so हमारे लिए Bahia Palace सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस था. And tickets to the Bahia Palace you can either buy online या आप काउंटर पे भी ले सकते हैं. और जितना मुझे याद है टिकट प्राइस was about 7 euros. It is a 19th century palace with a set of gardens located inside the city. Today, it is one of the country's most important cultural heritage and is one of the must-see places while in Marrakech. Bahia means brilliance, and this palace captures brilliantly the essence of the Islamic and Moroccan style of architecture. We spent the larger part of the morning just wandering inside this palace and taking photos. It has some beautiful gardens filled with orange trees and small fountains. Indeed, a place fit for a king and his wives. So this city has about 3 or 4 gardens which are quite famous. One was the Secret Garden, which was closed last evening. Yeah. The other is the Menara Gardens, but we've chosen the Jardin Majorelle because it has the house of the famous French designer Yves Saint Laurent. I don't know if I'm saying that right. Probably yes. But I am interested in fashion, so that's why we chose it. So let's go there. After touring the Bahia Palace, we hailed a taxi from its entrance gate to take us to the Jardin Majorelle. Now this is a place located a little away from the Medina of the city, and to go there you do need a car. Of course, as a tourist you will be charged a rate that is higher than what the locals pay, but that's just how things work here in Marrakech. अब क्योंकि ये गार्डन माराकेश के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है तो इसीलिए टिकट काउंटर पे हमें काफ़ी लंबी सी लाइन मिली, लेकिन प्रोसेस काफ़ी फास्ट था तो हमें करीबन 10 मिनट लगे. एंड अगेन टिकट प्राइसेस 70 दिरहम से 7 यूरोस थे. Majorelle Garden is one of the most important and iconic features of the Red City, an Instagram favorite. You haven't been to Marrakech if you haven't grammed from the garden, right? Well, does it live up to the hype? The answer is both a yes and a no. Was it something unique, something that I had never seen before? Yes. Could I have missed something extraordinarily beautiful had I skipped visiting this? Yes and no. I mean, we visited the garden around early evening and it was jam-packed with tourists, so even if it is an oasis of green, a perfectly manicured piece of beauty in the dry land, I think I could have lived with not visiting this place altogether. सो गार्डन में पूरा दोपहर बिताने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल चले, जो थी माराकेश की पूरी दुनिया भर में फेमस लेदर टैनरीज, जहाँ पर सालों से हाई क्वालिटी लेदर गुड्स तैयार किए जाते हैं. ये टैनरीज पुरानी शहर या मेडिना में है और शहर का वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है. यहाँ पर जो लेदर गुड्स बनते हैं उसके पूरे प्रोसेस को देख सकते हो. डैट मीन्स फ्रॉम स्क्रैच फर्स्ट प्रोसेस से लेके आखिरी प्रोसेस तक. और हमें यहाँ जाके पता चला कि जो लेदर होते हैं उनको क्लीन करने के लिए कबूतर की टट्टी यूज़ की जाती है. और ये टैनरीज आप टूरिस्ट गाइड के साथ भी देख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ पे करना पड़ेगा या आप खुद से भी देख सकते हो. और एंड में अगर आपको कुछ पसंद है तो ख़रीद लो, बार्गेनिंग ज़रूर करना. तो आई होप आपको ये माराकेश का ब्लॉग अच्छा लगा, हमारा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा. एंड आप भी आगे फ्यूचर में कभी प्लान बनाएंगे माराकेश आने का. इसी में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ हम नहीं जा पाए, तो मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है, तो ज़रा आपको बता देता हूँ. तो आप और कहाँ जा सकते हैं, जैसे कि एक था बेन यूसुफ मदरसा. ये एक इस्लामिक लेट से कॉलेज था जो बहुत ही सुंदर है कहा जाता है. एंड हमने फ़ोटोज़ भी देखे थे, काफ़ी ही सुंदर है.
तो अगर आपको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आप वहाँ जाइएगा। दूसरा एक मेला करके एक जूइश क्वार्टर है, तो अगेन उनका एक अलग स्टाइल होगा। वहाँ की गलियाँ सुना है मैंने काफ़ी नैरोज़ हैं, बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं, तो अगर आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर वहाँ भी जाइएगा। एक है मीनारा गार्डन्स, अगेन हम नहीं गए थे क्योंकि शायद उस टाइम बंद था या हमारे प्लान में नहीं बन रहा था मीनारा गार्डन्स, तो अगेन अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर वहाँ जाइएगा। और एटलस माउंटेन्स का ट्रिप्स चलता है, तो आप जैसे जिस BNE में रह रहे होंगे वो आपको बोलेगा कि ठीक है अगर आपको एटलस माउंटेन जाना है तो आपको आई थिंक 10-20 यूरोज़ लगता है, एंड आपको वो गाड़ी से ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का ट्रिप हो जाता है। तो आप गाड़ी से आपको एटलस माउंटेन्स लेके जाएंगे, वहाँ की आसपास की चीज़ें दिखाएंगे, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, एंड देन वंस यू आर डन यू कैन कम बैक। तो आप वो भी देखने के लिए जा सकते हैं। अब हर या एक तरीके से कहें तो माराकेश में हर टूरिस्ट के लिए कुछ ना कुछ है। आगे वीडियोस में आपको हम अपना टोटल खर्चा भी बताएंगे, सो हाउ मच वी स्पेंड इन माराकेश, वीज़ा से लेके फ़्लाइट से लेके सब कुछ कितना कॉस्ट हमारा बैठा, तो कि आपको भी एक आइडिया लग जाए। एंड अब जल्दी ही कुछ और भी जगहों के ब्लॉग्स हम डालेंगे अपने चैनल पे, तो अगेन सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।